Hello. Hi. Hi, everybody. Today we are talking about something really interesting. And this is something that I have found to be extremely helpful. Um, as you may know, I am also a therapist. So, a lot of my couples who I see, clients who I see, we discuss quite a lot on the aspects of finances in relationships. And since this month we are doing, I like the whole month we are talking about non-toxic relationships. We thought that let's bring in the aspect of finance also, and the last week we did the legal aspect of it with Tanay. So today we have Saharsh with us. A brief of him is he is a good friend and also the CA who works to handle the finances and the financial aspect of shift density. So it's very much in house that we are doing this live. And I'll just add him in this conversation. Let's just bring him in and hi, Hi, how are you? I am very good. You tell me, how are you? Been a hectic day, but I'm very happy to bring this conversation for people. Um, I'm glad too. okay, so you being a CA, tell us a little bit about how much does finances hold an importance in a person's life? Look, there's this thing. If it's fine, I'd like to continue this whole thing in my mother tongue, like in Hindi, because I'd be comfortable that मैं ज़्यादा अच्छे से अपना ओपिनियन शेयर कर पाऊंगा. तो Okay. फाइनेंसेस जहाँ तक आते हैं ना, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. मतलब Mm-hmm. देखा जाए तो everything, almost everything depends on your finances. Money Mm-hmm. has a lot of influence in our life. Mm-hmm. फिर ये चीज आ जाती है कि बस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप मनी को उतना इम्पोर्टेंस दो जितना वो डिजर्व करता है, पर उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है. Yeah. नथिंग मोर नथिंग लेस. ठीक है. Mm-hmm. तो आई तो टोटली थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. अपन Mm-hmm. उस चीज को की वजह से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं. अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस और एवरीथिंग. आज के समय में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, बट उस बहुत Yeah, जरूरी है everything पैसा boils down उसके to लिए भी. money. एग्जैक्टली, Yeah. एवरीथिंग कम्स डाउन टू मनी. तो Yeah. ठीक है, पैसा होता है तो चीजें स्मूथ होती हैं. Yeah. ऐसा नहीं कि नहीं होता है तो चीजें चलती नहीं है, पर होता है तो स्मूथ होती है. That is why, we strive to do things which give us money. We do other things as well, they are important as well, but we do things which give Yeah. us money. We have to. So yeah, That's finances great. are important. Yeah. And I'm sure you being a chartered accountant, you must have definitely seen people like the relationship they have with money. So let me start with the questions that I have for you. My first Okay. question is, what are some of the main financial related concerns that you have seen in people who are maybe unmarried, who are living in, who are in like different relationships, who are casually dating? Because I think, like you were saying, relationships doesn't need to be always sexual in nature. They can also be siblings and parents and relationship with your friends and stuff. But what are the most common concerns that you have seen? Look, जो सबसे बड़ा कंसर्न मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों के Mhm. बीच में, any kind of partner you have, be it a friend, be it a romantic partner or any kind of partner, ऐसा होता है कि आपको कुछ करना है साथ में किसी के विच, जो कहीं जाना है, सपोज छोटी सी चीज है, रेस्टोरेंट जाना है, कुछ है, तो आप के मन में ये बात आती है, कई बार नहीं आती है. इट डिपेंड्स हाई, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिलेशन यू शेयर विद योर Yeah, पार्टनर एंड से. तो yeah. कि आप कि हाउ वुड द पैसे कैसे मैनेज होंगे.
जो भी खर्चा Yeah. लगेगा वो कैसे मैनेज होगा। तो Mm-hmm. वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप सामने वाले के साथ जो टर्म्स हैं आपके वो किस तरीके के। टॉकिंग Yeah. अबाउट अनमैरिड कपल और पीपल हु आर इन लिव इन और इवन मैरिड कपल्स साइड से, तो उसमें ऐसा होता है, देखो अनमैरिड कपल्स का व्हाट आई थिंक कि उनको इंस्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी कम फेस करने पड़ते हैं, पर जिस तरीके के होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है Yeah. कंपैरेटिवली। जो लिव इन पार्टनर्स होते हैं या मैरिड कपल्स होते हैं, उनकी उनके लिए चीजें थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाती हैं धीरे धीरे विथ टाइम, क्योंकि वो साथ में रह रहे हैं। वेरियस फैक्टर्स, नॉट नेसेसरली, बट ठीक है, कंपैरेटिवली उनके बीच बेटर होती है चीजें। वो लोग Mm-hmm. समझते हैं, उनको पता होता है दूसरे। पर जो अनमैरिड कपल होते हैं, या जैसा मतलब बेसिकली यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उनके Yeah. बीच उतना क्लैरिटी नहीं होता है, क्योंकि दे आर नॉट दे नो ईच अदर वेरी वेल। Again, unmarried couples who are not living together, even they have a very good understanding many a times, but then Yeah. that's the ideal case। तो उसमें इस Yeah. तरीके की चीजें आती है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ गए तो उनका इम्पैक्ट कई बार बहुत बड़ा होता है। तो उन चीजों को अपने को थोड़ा सा चेक में रखना चाहिए। एक इस Mm-hmm. तरीके की चीज हो जाती है, मतलब बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जो भी है वो मतलब there's just one person who is offering to pay every time, and the Mm. other person is not even asking to Yeah. split the thing, or you Inequality what I guess in paying. exactly, Hmm. exactly। तो sometimes these things can lead to a difference। क्या होता है, कुछ Hmm. ऐसे लोग होते हैं जो ठीक है who won't mind, ठीक है, Hmm. if their partner is not even thinking तो they are fine। Yeah. अपने को सबसे इम्पोर्टेंट होता है वी शुड बी अवेयर अबाउट द अदर पर्सन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी साइड से और द फाइनेंशियल स्टेटस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मतलब अदरवाइज हाउ वुड यू नो देम। आपको उस Yeah. इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, वी गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। तो अपने को उसको पता होना चाहिए कि यार what I am able to give in this relationship financially, and what the other person is capable to give। Yeah. Yeah. And तो that makes a lot of sense. So what you're talking about is basically the idea of कि communicate होना चाहिए, where एक्चुअली we are at, and being able to have that some kind of an equality when it comes to paying and also facing financial यस, यस। situations. So what do you think, what according to you is like, why do you think it's like, of course we know why financial independence is important, but how do you think people can achieve that? Or like, what are different ways that people can be financially independent? Okay, financial independence is very important in any kind of relationship, I'd say, married or unmarried or live in। क्योंकि लुक लाइफ इज अनसर्टेन, आप किसी पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते कभी भी। Exactly. अपन मतलब द फेज विच आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ बोल सकते हैं, इसीलिए क्योंकि अभी तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। Yeah. नाउ वी आर ट्राइंग कि अपन खुद इंडिपेंडेंट हो सके, उन पे Yeah. डिपेंडेंट ना रहें। तो Yeah. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेइंग दैट आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट अगर नहीं रह सकते, तो आप अपने पार्टनर पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हो? लाइक वो तो और अनसर्टेन होता है यार आज के टाइम में। Mhm. वी डोंट नो हु इज गोना स्टे एंड हु इज नॉट। तो Mhm. बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना। अपन को अगर आप सपोज डिपेंडेंट हो किसी पे, तो सामने वाले के लिए भी सामने वाले को जब रियलाइज हो जाएगा कि कोई इंसान आप पे डिपेंडेंट, तो उनके लिए भी एक वो ऑब्लिगेशन बन सकता है कल को, इन Mm. व्हाई नॉट। और Yeah. ठीक है, इट Yeah. इज वेरी I- इंपॉर्टेंट। Yeah. या A lot of people usually do take as like, if you love me, you will do this for me.
And आप अगर like this is the way to show love, by buying you something of certain value. And it could be, but yeah, when it comes to financial independence, um, like basically, I would like to know if, like, from your career, what are the basic things that people can do to become more financially independent? Like, yes, you can, one of the things is that, like, you getting a job and making money. That's That is like that's basic. like But basic, yeah. um, if there is one or two things that you can give, tiny tips. लाइक ठीक है, अ वेरी इम्पोर्टेंट टिप आई वुड थिंक ऑफ, क्योंकि मैं जो चीज देखता हूँ कि इम्पोर्टेंट होती है, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस बेसिकली। Mm-hmm. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि फाइनेंशियल इश्यूज क्या होते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कपल है, ठीक है, दे प्लान थिंग्स आउट, दे कम्युनिकेट, विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान करनी चाहिए चीजें। सडन प्लान्स Mm-hmm. बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब बोलना चाहिए अच्छा Yeah. फील होता है, बट स्टिल फाइनेंशियल चीजों को लेकर अगर आप पहले से प्लान कर सकते हो, तो दैट गिव्स अ वेरी गुड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आई वुड से, क्योंकि Hmm. यू एक्सपेक्टेड थिंग्स कमिंग, खर्चे हो गए या क्या। मैरिड कपल्स या लिव इन कपल्स के लिए ये चीज हो सकती है कि दे कैन प्लान मंथली बजट, एंड Mm-hmm. मंथली उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं वो लोग। तो दैट हेल्प। फिर आप Yeah. अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के बाद आपकी जो इनकम है, आप उसमें से सेविंग्स कर सकते हो, सेविंग्स से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, Mm-hmm. थिंग्स लाइक दैट मेक यू गिव यू हेड स्टार्ट, हेड से। और Yeah. दे मतलब आपको एक स्टेप तो मिलता है यार, टू बी टुवर्ड्स Yeah. बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसीलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज के समय में, मैं या कोई भी इंडिपेंडेंट है एंड उसका पार्टनर है, जो यार सबकी लाइफ में स्ट्रगल का फेज आता है और सबका अलग अलग टाइम पे आता है। तो अगर मैं या Mm-hmm. कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो अपने पार्टनर को जरूरत पड़ने पे या किसी को भी एनी काइंड ऑफ पार्टनर सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब Yeah. डिपेंडेंट होना भी कभी एक फेज आता है जब आपको होना Yeah. पड़ता है डिपेंडेंट। अगर Yeah. एक इंसान इंडिपेंडेंट रहेगा तब तो कोई दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो पाएगा। मतलब Yeah. वेरी स्मॉल थिंग, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. Somebody commented these are just chartered things. And that's so true. Okay, so recently there have been people talking about financial infidelity. So infidelity, for people who may not know, it's cheating. Just a या very posh word for cheating. धोखा देना. And financially is basically when you are like hiding expenses, or when you are like, it could be so many different things. So why don't या you tell us a little bit about that, about financial not infidelity, and what are the signs that people can Okay. look for? So yeah, like you said, financial infidelity is basically hiding finances from your partner. Like Huh. like the normal we refer to as cheating. This is cheating in relation to your finances. आप Hmm. अपने खर्चे छुपाते हो पार्टनर से अपने, आप अपनी इनकम छुपाते हो फॉर Mm-hmm. वट एवर रीजन, आप अपने पैसे छुपाते हो कि आपके पास इतना सारा पैसा है, या फिर आप कोई लोन है। कई बार पीपल Mm-hmm. फॉर वट एवर रीजन, कई बार ऐसा होता है कि अपने पार्टनर को स्ट्रेस नहीं देना है, या बहुत बड़ा Mm-hmm. बड़ा लोन होता है, नहीं बताते कि इतना बड़ा लोन लिया है सर पे। वो चीज भी होती है, अपने पेरेंट्स Mm-hmm. को नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो रीजन कुछ भी Mm-hmm. हो सकता है, अच्छा बुरा वट एवर, बट दैट इज वट मीन्स फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। आप Mm-hmm. ठीक है। और इसका कई बार इम्पैक्ट इमोशनल इनफिडेलिटी से भी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इसका। मतलब Definitely. ट्रस्ट जो होता है इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी रिलेशनशिप में, ये उसको हिला सकता है। एंड ट्रस्ट इज Yeah. द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। Every कि आपको relationship. फील होगा यार कि मैं नहीं बता रहा हूँ, या कोई मेरे को नहीं बता रहा है कि वो
उसके पास इतने पैसे कैसे आए, या उसने ये हम्म खर्चा कैसे कर लिया। तो हम्म सस्पिशन, और ह्यूमन माइंड इट या वंडर्स। मतलब अगर या पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो फिर कुछ भी सोच सकता है। तो इट्स या बेटर टू बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज it is the base of every relationship. And या science, where if you're talking about the science of infidelity, like आपको सपोज कोई खर्चा ऐसा कर दिया आपके पार्टनर ने, मतलब आप हम्म यू एज अ कपल आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज, अ रफ पैच यू कैन से, and then हम्म suddenly there was a expenditure, planned expenditure, which you did not know कि कैसे होगा, you were हम्म worried about it, but suddenly it happens and it is met with, और आपको समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, you're asking your हम्म partner about it and they're like बस हो गया यार, don't worry, I've taken हम्म care of it. No, that's not how it works. I think I should know, या or both of them should know कि the कैसे amount हुआ. of stress you take by Exactly, thinking about it, and then it's not, exactly, and then suddenly it's gone. Yeah, definitely. And exactly. even what you brought up is a very important point ki chupana these things, when you're hiding it, it becomes a more suspicious thing ki kahan se la rahe hain, are they doing anything which Exactly. is illegal? Are they doing something which can Actually, lead me to, because a lot of times when there are divorces which happen, or when there are breakups which happen, a lot of times these splits happen because also of financials. They play a huge role on it, some people, like for example, I know of people who are in relationship, who are well off enough to take care of themselves. Ki suppose if they are going out on a date, and just because they are of a certain gender or they have certain roles, they are just एक like, no, सेकेंड. no, the यस other सर, person needs to मैसेज है चाबी मेरे पे. just because they are of that certain role, they think, um, बंद कर दो. they need to like make the other partner pay. Ki I am rich enough, but then since the society derives you to pay for everything, then you pay. I cannot, so that also is kind of unfair, I think, for people. So, रहेगा. my another question for you is, we are talking about how it is important. So now I want to bring you into, these are also very sensitive matters. कि finances के बारे में हम लोग कभी भी बचपन से पढ़ते नहीं हैं. We have not been taught to understand, like half the people are still struggling to understand what is share market, what is investment. A lot of people go through scams because of that, which is very difficult for them, and so, like, so on and so forth, so it's a very private matter also. So what do you think are some of the ways that you can kind of discuss with your partner certain things which are financial in nature? Because I think knowing that could be helpful for people here. Actually, look, the first thing which is always very important, like we said थोड़ा देर पहले ही, कि कम्युनिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कम्युनिकेट करना किसी भी चीज को लेकर के, आपको अगर कोई बात है, ठीक है, कम्युनिकेट करना होता है इम्पोर्टेंट सेड, बट टू बी एबल टू कम्युनिकेट, आपको सामने वाले को एक प्लेटफॉर्म, जिसको बोल सकते हैं, एक एनवायरनमेंट देना होता है कि वो इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हो सके चीजों को लेकर के. आपको ओपन होना पड़ता है उस इंसान की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए. यू शुड नॉट जस्ट यू शुड बी एक्टिव लिसनर. आपको अवेयर होना चाहिए चीजों के बारे में. जैसे थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि हमको समझ आना चाहिए दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटस या कंडीशन. अगर नहीं पता है तो हमें जानने की कोशिश करना चाहिए. हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये चीज होती है कि आपको नहीं पता होता सब कुछ उनके बारे में. अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है. आपको कोशिश Hmm. करनी चाहिए ऐसे तरीकों से कोशिश करनी चाहिए जानने की कि सामने वाले को हर्ट ना हो. आपको Hmm. इट इज एम्पैथी होनी चाहिए कि वो Hmm. किस तरीके से, अगर हम कुछ करने का प्लान करते हैं खर्चे, तो वो किस तरीके से मैनेज करेगा. और या Yeah.
मेरा पार्टनर कैसे उस चीज को कर पाएगा। हमको अगर कोई इंसान है नहीं कर पा रहा है, उसको भी समझ होनी चाहिए कि यार ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू इट, वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सेप्ट अपनी सिचुएशन को। अपन को सबसे पहले एक तो पता है, कभी शर्म नहीं होनी चाहिए खुद की चीजों को एक्सेप्ट करने में यार। ताकि आप व्हेन यू आर एबल टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, देन ओनली अदर्स विल एक्सेप्ट। फिर Yeah. आपको इस चीज के लिए ओपन होना चाहिए कि भाई अगर दूसरे चाह रहे हैं कोई चीज करना जो आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से बाहर है, विच इज वेरी फाइन, दैट इज हाउ इट इज। तो यू शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। एंड इट्स मतलब बीइंग सेड दैट, आई थिंक दिस शुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग आउट देयर, Yeah. क्योंकि इट इज देयर। हर कोई अलग स्टेज पे होता है। There is a फिर financial difference. Yeah. एग्जैक्टली और अज्यूम नहीं करना चाहिए चीजें अपन को कि यार ये तो कर ही लेगा, यार ये तो नहीं Yeah. कर पाएगा क्या। डोंट अज्यूम एवर, कम्युनिकेट, बी पार्टिसिपेटिव इन अ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कपल्स के लिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक इंसान, तो दूसरा कैसे समझेगा आपको। कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, आई नो अ फ्यू, जिसमें एक इंसान को फाइनेंस की नॉलेज होती है, दूसरे को नहीं पता होता। मतलब एकदम नहीं पता कि कैसे होंगी चीजें। तो आपको दूसरे इंसान को समझाना होता है, Educate करना पड़ता है. एजुकेट करना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। कई बार प्रोसेस काफी लंबा होता है, तो आपको करना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज, ओन अप टू इट। तो ठीक है, इस तरीके से आप दीज आर द थिंग्स अगर अपन ध्यान रखें तो अपन चीजें मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो सकती है, डिस्कस करने में आसानी हो सकती है। एग्जैक्टली Yeah. बस। Yeah. Yeah. So one of my other and my one of my last questions before I ask, for people who are listening, if you have any questions, feel free to write to them. Like write them here and we can try and address that. Do you think it's a good idea to have a joint account for people who are, maybe dating or who are in relationships, who are yet to be married, at any point, or who are married? Do you think it's a good idea to have a joint account? That highly depends। Yeah. मतलब I would say कि it is a very huge step। I'd accept that कि ऐसे you cannot just have a joint account with anybody out there। Yeah. कि you're dating someone casually or just an acquaintance or a very मतलब you get what I'm saying कि बड़ा step होता है। Yeah. It involves legal issues as well। बैंक अकाउंट ओपन करना छोटा बात नहीं है। It depends on Yeah. the kind of relationship you have and the level of trust there is between you guys। अभी तक we discussed it earlier and I was saying कि a lot of banks don't allow to, but ठीक है, after talking to you I researched about it and a lot of banks allow। मतलब they don't look into the relationship you guys share, but still there are a few banks जिनको जो अलाउ नहीं करते if you are not a relative। तो वो दे लुक इनटू योर रिलेशनशिप स्टेटस, देन ओनली दे अलाउ। बट ठीक है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो अलाउ करते हैं ओपन करना, एंड इट इज ठीक है। आई वुड से कि अगर आप उस लेवल पे रीच कर गए हो, जो मैं द what I should say preconditions I'm saying कि ये सब होना चाहिए, अगर वो रीच कर गए तो इट इज, आई वुड पर्सनली से कि इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज दैट इज हाउ यू लर्न। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपन बात कर रहे थे, पता है एक इंसान करेगा ना तो डर ज्यादा होता है किसी भी, चाहे इन्वेस्ट करना हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, चाहे सेविंग्स करनी हो। पर दो लोग करते हैं ना तो वो चीज यू यू हैव अ सेंस ऑफ बॉन्ड, आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। तो और बेटर फील होता है कि मतलब सेफ फील होता है कि यार ठीक है, वी आर Yeah. डूइंग दिस टुगेदर, कल को कुछ होगा तो वी बी एबल टू मैनेज थिंग्स टुगेदर। तो उस Yeah. तरीके से Yeah. And that also is very important कि अगर आप एक बैंक अकाउंट रख रहे हो, so whenever suppose like you're going out, you can like pay from that account, which दैट has अकाउंट एग्जैक्टली your like, एग्जैक्tly yeah, like दैट it's इज not दैट then इज just द your or my expense, but it's like a इट्स couple expense. कपल एक्सपेंस। एग्जैक्टली जो चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग यू सेड कि आप इश्यूज होते हैं, वो सारे इश्यूज का एक
बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है ये कि आप अपने, जब भी आपके पास सेविंग्स हैं, स्पेयर फंड्स हैं, तो आप अपने इस अकाउंट में सेव कर दो. डोंट लुक इनटू हु डिपॉजिटेड इट, बट इट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ इट इज बीइंग स्पेंट. तो आपके पास है, आप बिल्कुल करो. और जब स्पेंड करने की जरूरत पड़ रही, किसी एक की जरूरत है, दोनों की जरूरत है, बिल्कुल. कई बार गोल्स अलग अलग होते हैं अपन के, दो लोगों के. Mm-hmm. तो ठीक है, इट्स Yeah. वेरी गुड, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं. Yeah. And I think sometimes I would also like to bring in the aspect कि कई बार ऐसा होता है कि you are earning and your partner is earning also. Um, यानी there is a possibility कि you earn more than your partner or your partner earns more than you, and it sometimes feels like a competition. It sometimes feels like you feel guilty कि अरे मैं मेरे पार्टनर के साथ all of that. तो आई थिंक जब ऐसा फीलिंग्स आता है, बीइंग अ थेरेपिस्ट व्हाट आई कैन से कि कई बार दीज फीलिंग्स आर वेरी नॉर्मल. एंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ यू कैन बी वल्नरेबल और आप उनको ये सब बात शेयर कर सकते हो कि कि जब आप इतना अर्न करते हो, आई रियली अप्रिशिएट यू, बट देन कभी कभार आई फील बैड अबाउट इट कि यानी यू आर समटाइम्स गिविंग मोर टू द रिलेशनशिप. मैं उतना रिलेशनशिप में नहीं दे पाता हूँ या पाती हूँ, लाइक वट एवर. एंड दैट मेक्स मी फील बैड, which is I think one thing which you said very wonderfully कि not seeing sometimes the amount but कि for example the percentage of it कि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और मैं 10% दे रहा हूँ versus मैं 10,000 कमा रहा हूँ और 10% दे रहा हूँ, I think that percentage makes more difference than the sum of money, I feel. Actually, actually, and Yeah, even about the percentage, your intention कि you are, yeah, कई बार ऐसा होता है कि कोई 10,000 कमा रहा है, उसके खर्चे ही 8,000 हैं, बट इवन देन वो इंसान 2,000 भी दे रहा है. मतलब यू गेटिंग व्हाट आई एम yeah, yeah. सेइंग. और ठीक है, And बहुत yeah, इम्पोर्टेंट होता है, पता है. और एक लेवल आता है रिलेशनशिप में, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, जब यू स्टॉप केयरिंग, you just yeah, stop caring, and money becomes immaterial at that point. Like I was saying कि उसको इम्पोर्टेंस उतना देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, तो उस डिजर्व करने वाले लेवल के ऊपर इट बिकम्स इमटेरियल. अगर mm, आप उस लेवल पे आ गए हो अपने किसी पार्टनर के साथ, तो फिर ना, इट शुडंट मैटर कि हु इज पुटिंग इट. ठीक है, mm, इट्स जस्ट देयर. पता है, काम होना चाहिए, पैसे नहीं होने चाहिए, काम होना चाहिए. अगर yeah, आपको कोई भी गोल है, एज अ कपल, एज अ फ्रेंड, कुछ भी, वो गोल पूरा होना चाहिए. पैसे yeah, से होता है या कैसे होता है, yeah, दैट इज, किसके थ्रू आ रहे हैं, सोर्स क्या है, दैट इज ऑफ लेस yeah, इम्पोर्टेंट एट दैट yeah, स्टेज, I'd say. yeah. And somebody also asked ki relationship with friends is also a thing. So finance with friends also, yeah. Something which he was saying ki like so, a lot of people are also having like businesses with their friends जो वो start करते हैं. उसमें भी I think financial aspects need to be very clear. Very clear, very Yeah, clear. yeah. And if not, then I think people need you. कि सीए के पास जाके क्लियर करो. Yeah, or maybe you या कि 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 कैसे थेरेपिस्ट के पास जाके मैं, कि क्लियर हाँ, करो. कि मैं कैसे इस चीज को पुट करूं अपने पार्टनर के साथ. या या cool. So thank you so much for your insights. They are really helpful. And thank you, Saharsh, for doing a late night work for me I'm glad, I'm and honored for Shiv कि I Density. could join. I'm Yeah, honored to be a part of Shiv Density, as you all yeah, know, and yeah. it's really wonderful to have you here, and I truly appreciate every time I get a chance to. Mhm. बहुत ही अच्छा एक काम आपने शुरू किया है, and Thank I am you. glad by whatever odds and whatever luck I had to be a part of this. But Yeah. this is really wonderful, and we're really great to be a part of this. And we should put all the efforts we can. I Yeah, mean, that definitely. is very important. Okay, cool. With that,
good feeling in our hearts. Thank you so much for joining. And please Yeah. go home and I will. bye, people. Thank you for joining in. Cool. Yeah. Bye. चलो, Good night. बाय, गुड नाइट.